बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट टू रिकनेक्ट टू सम ऑफ द थॉट्स, कुछ चीज़ें रिव्यू और कंसोलिडेट करने के लिए, ताकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग एंड टू व्हाट एंड। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज और न्यूमरेसी यही दो चीज़ें हैं। दीज आर द फंडामेंटल्स इन KG to 12। और लैंग्वेज के फोल्ड में फिर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऑल द लाइफ अराउंड अस, और न्यूमरेसी इज़ विच इज़ द बेसिस ऑफ द साइंस। तो असल में तो शुरू वाले दिनों में बच्चे की पहले जो प्रोमिनेंट थॉट होता है वो लैंग्वेज का होता है। एवरीथिंग इज़ एक्चुअली इन द इन्वेलप ऑफ द लैंग्वेज इटसेल्फ, चाहे वो बच्चे की बॉडी है या व्हाट आई ईट और व्हाट आई प्ले विद और व्हाट आई टॉक इज़ लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज। बाद में हम फिर लैंग्वेज और न्यूमरेसी को कह लेते हैं एंड साइंस को, एंड लेटर फिर सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज अलग हो जाती हैं। बट व्हाट रिमेन्स फंडामेंटल विद इन दैट, जो इस वक्त इनेविटेबल होगा, दैट विल बी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, राइट। और लेकिन ये चीज़ें इन द बिगिनिंग ये अलहदा स्ट्रैंड्स में नहीं नज़र आती इन अ सिस्टम। यस, टीचर हैज़ टू बी ट्रेन्ड on the maths, on language and on the numeracy and science पे, लेकिन that's not how things look like. The things look blended in our calendar. We talk about the same thing, let's say cloud, but we are doing the art of the cloud and the science of the cloud and the language of the cloud in one activity, in one immersive learning activity. That's how it looks like. Separate sessions, separate subjects, separate teachers इस प्राइमरी स्टेज में, K-6 particularly में, एग्जिस्टिंग टर्मिनोलॉजी में अगर हम उसको कहें तो बिल्कुल नहीं होते इन द एलिमेंट्री स्टेज। लेकिन बाद में भी चीज़ें फिर भी डिस्कनेक्टेड नहीं रहती, जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि सब बायो और मैथ्स एंड मैथ्स और बायो। नो, नॉट एट ऑल। बाद में भी चीज़ों में, ऑल्दो आई एम इनटू अ प्रोडोमिनेंट थिंग, बट वो कनेक्ट नज़र आना चाहिए। कनेक्ट से मुराद ये है कि अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को, से द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम को अपने बॉडी में, नेचर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर बच्चे को दिखा नहीं सकता, तो एसेंशली आई हैव नॉट कन्वेड द कॉन्सेप्ट। आई माइट हैव कन्वेड द लेबर ऑफ द कॉन्सेप्ट बट नॉट द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। आई हैव नॉट कनेक्टेड द चाइल्ड टू दैट थिंग। सो ये कनेक्शन बाद में भी रहता है। This all is actually in an environment or in the culture or in the fold of manners. अगर ये manners वाला element नहीं है ना, तो फिर what kind of society we are making it? And we have seen कि ये सारी चीज़ें जो है ना, उसमें एक discipline, हम उसको manners का हिस्सा भी कह सकते हैं, but since it's a big ticket item, discipline, we discussed it in detail कि it's not about कि children are just fighting with each other. Discipline has a lot of behaviors of being left behind, of being less resilient. वो सारे हमने behaviors discipline के पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं ना कि ये डिसिप्लिन के इश्यूज़, चिल्ड्रन नॉट लिसनिंग, चिल्ड्रन आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, तो पता चलता है कि ये इश्यूज़ सिर्फ स्कूल में रिजॉल्व नहीं होते। ये इश्यूज़ गो बैक टू बिफोर द स्कूलिंग बिगैन। दे गो बैक टू होम, दे गो बैक टू वेयर द चाइल्ड इज़ कमिंग फ्रॉम। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि अब आप सिस्टम में देख लें, मैं पाकिस्तान की टिपिकली बात कर रहा हूँ, जहाँ पे भी गर्ल्स हैं दे आर better than boys in terms of their behavior, their performance, their everything. आप overall statistics देखें तो आप residential और non-residential स्कूल का देख लें, you will find far less issues to manage in the residential systems, and even the performance, even their outputs. You will find far less issues in the religious, जो आपको सेकुलर वाले स्कूलों में, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में नज़र आ रहे हैं, आपको मदरसे में वो इशू नज़र नहीं आते। दे आर फार बेटर एंड डिसिप्लिन। द वन थिंग इज़ कॉमन इन गर्ल्स इन रेजिडेंशियल, क्या चीज़? डिसिप्लिन। सो ये डिसिप्लिन तो घर से आएगा, और इसका मतलब है कि द प्राइमरीली पेरेंटिंग से आएगा। और इसको फिर इसके का सारे जितने भी सोसाइटी में चैनल्स हैं, चाहे वो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो हमारे स्कूल्स हैं, दे शुड ऑल बी टॉकिंग अबाउट एंड शुड बी अ सोर्स ऑफ पेरेंटिंग। टीचर और स्कूल सिस्टम अगर पेरेंटिंग एक्सपर्ट नहीं है ना, अगर वो बच्चे के बाप को, माँ को, बच्चा 3 साल का या 6 साल का या 12 साल का है, उसकी उम्र के मुताबिक पेरेंटिंग पे एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा, और मस्जिद वाला ये और चर्च वाला ये बात नहीं कर रहा, तो देन व्हाट चैनल्स आर अवेलेबल टू द पीपल?
नथिंग। फिर तो एसेंशियली बात वही रहेगी कि हम एक बंदा पैदा कर रहे हैं जिसको कोई पता नहीं है कि सोसाइटी में मैंने बिहेव कैसे करना है। इट्स ऑल अबाउट किरदार साजी, शख्सियत साजी, तरबियत, विच लाइज एसेंशली इन द पेरेंटिंग। यहाँ पे हम पेरेंटिंग और टीचर में असल में तो तखसीस नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू मेक द सिस्टम एफिशिएंट रियली, अपनी लर्निंग के हिसाब से कि मैंने कब क्या बताना है। द एलिमेंट ऑफ timing is extremely important. There it has to sync with nature in the overall calendar. If it syncs with the nature, the things go in a very smooth way in the child's mind, because those experiences the nature has already created around them, and that's the teachable moment. और दूसरे उस दिन में अगर buckets में देखें तो it must sync with our chronobiology. अगर ये नहीं है तो really it's ऑलमोस्ट इनएफिशिएंट सिस्टम एंड नॉट वर्थ इट। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा उसमें साइंस है कि हाउ वी कैन गो, कि किस फ्रीक्वेंसी में हमें चीज़ों को रिपीट करना है, कब किस किस्म की एक्टिविटी, इवन दिन के किस टाइम में कौन सी एक्टिविटी इज़ मच मोर यूजफुल, इफेक्टिव, एफिशिएंट टू टीच। तो अगर हम अपनी इस साइंस से पिछले 50 सालों में जो इतना एविडेंस क्रिएट हुआ है उससे लर्न करते हैं तो सिस्टम है एक्सट्रीमली एफिशिएंट। वन थिंग दैट मेक्स इट इवन मोर एफिशिएंट इज हर चीज़ एक जैसी इंपॉर्टेंट नहीं होती। देर आर फ़र्ज और सुन्नत और नवाफिल का कॉन्सेप्ट है ना। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जब आप नॉलेज ग्राफ बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट का ग्राफ बनाते हैं कि हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सम कॉन्सेप्ट्स आर कनेक्टेड टू मल्टीपल अदर कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्रैक्शंस, वी हैव गिवन एग्जांपल मेनी टाइम्स, लाइक एरिया, लाइक। इसी तरह आप देखेंगे कि असल में व्हेन एवर यू डू अ रिफॉर्म वी सिंप्लीफाई द सिस्टम, we simplify, we delete things, not add things. We take out the critical and do it at the depth, and all rest of the things simply fall in line. देखिए एक हदीस ही बॉडी ऑफ हदीस में से स्कॉलर्स कहते हैं कि काफ़ी है, दूसरे के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए करते हो, एंड यू आर डन। एक आयत ही काफ़ी है, 7,199 स्कॉलर्स बताते हैं कि सारे मैनर्स और कैरेक्टर व खुज़िल अफ़्व वामिर बिल मारूफ वारिद अनिल जन्न, एंड यू आर डन। एक सूरत वल असर ही काफ़ी है एंड यू आर डन। ठीक है ना। हम नॉइज तो बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं लेकिन उसमें सिग्नल नहीं बताते कि द रियल थिंग इज दिस, ऑल रेस्ट आर डिटेल्स। एक चीज़ जिसको शन करना है वो झूठ है, एक चीज़ को जो अडॉप्ट करना है वो ट्रूथ और सफाई है, बाहर की और अंदर की, द तज़किया। एक रूल जो लाइफ में अडॉप्ट करना है वो अदल है। एवरीथिंग हैज़ अ प्लेस and there's a place for everything and everything should be at its place. It goes into all domain. It goes into hifz maratab, it goes into your traffic, it goes into meritocracy, it goes into everything. हमने चीज़ों को needlessly clutter किया हुआ because nobody sat down to declutter or simplify it. ये सारी चीज़ें अगर हम करें, remember what we wanted to do is and we wanted to achieve is कि हम ऐसा बच्चा पैदा करना चाहते हैं who can think, सेल्फ लर्नर, हु कैन कम्युनिकेट, और वो जो सेल्फिश नहीं है सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, उसे ये भी पता हो कि टीमों के साथ कैसे काम करना है। द वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल नाउ, राइट। द सेल्फ लर्नर्स एंड पीपल हु कैन लिसन, कैन कम्युनिकेट एंड कैन कोलैबोरेट। ये सिर्फ उसी वक्त होगा इफ द लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग इनसाइड द क्लास आर द वी टाइप एक्टिविटीज। Teacher is doing thing, he does that motivational thing and he does convey the concept, but it's the we thing which is the predominant. It's the small group activities which cover most part of the time, and then it's you where the individual activities are done. If that's not happening, it will not. देखिए हमारी methodology यही है शुरू से, play, question, reflection, story. And after going through lots and lots of these research about how we learn, you will find out कि इन चारों के अलावा कोई एलिमेंट और नहीं है ये सारी चीज़ अचीव करने का। It's about the play, question, reflection and story. Reflection means deep thinking, means synthesizing, getting insights, eliciting principles out of it, right? और हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम देखिए, हमारा बच्चा थिंकर नहीं है, ठीक है ना, ही जस्ट टोज, वो हर्ड मेंटेलिटी का है। हमारा बच्चा सुनता नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। हमारा बच्चा सेल्फिश है एसेंशली, वो तो उसके सबके कम्पीट के इन्वायरमेंट में आ रहा है। इन तीनों को हैंडल करने की चीज़ें सिस्टम में होनी चाहिए। एक्चुअली नन ऑफ दीज एक्टिविटीज इज अ सिंपल 1-to-1, इट्स अचीविंग लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एट द सेम टाइम।
प्ले सिर्फ ये नहीं है कि प्ले बच्चे को इनवाइट कर रही है टुवर्ड्स थिंग, प्ले इज ऑल्सो क्रिएटिंग सोशल स्किल्स इन द चाइल्ड. सो दिस इज व्हाट इट इज. अगर क्वेश्चन के लिए कोई एक चीज थिंक के लिए करनी है तो दैट इज क्वेश्चनिंग. टर्न योर टॉपिक्स इनटू क्वेश्चन एंड यू आर डन. कोलैबोरेट के लिए कोई एक चीज करनी है तो दैट इज यू नीड इन द वी टाइप मोड इन योर सेशन प्लान्स एंड एक्टिविटीज. Obviously that requires a little bit different classroom as well, but this is what it does. Communication के लिए कोई एक चीज़ नहीं है. Essentially it lies in your discipline and your manners, so that you listen. तो ये सारी चीज़ें are to be put into in a very systematic way, in a very well designed way. ये चीज़ें एक टीचर पर नहीं छोड़ी जा सकती, right? All this thing is now guided by cognitive psychology, behaviorals, and all ethics and moral religion. Everything is guiding it, and we have huge lots of evidence on it. Simple thing to say is कि अभी तक इन सारी चीज़ों के बावजूद हमारे पास कोई ऐसी साइंस नहीं है कि हमें क्या पता चले कि ऐसा करने से बच्चा ऐसा करता है, because brain sciences are still at their very very infancy stage. We have learned, and nations have learned it from great teachers. An'amta alayhim, the people who were the best in that category, the best in racing, the best in swimming, the best in play, the best in chess, or the best in communication, or the best in physics, the Richard Feynman, anybody, the best in maths, Maryam Mirza Khani. उनकी ट्रेजेक्ट्री से कौमों ने सीखा है कि what works. Simple. And it's not the content that matters really. Content does matter. बट द कंटेंट तो सेम है पूरी दुनिया में. सिंगापुर वाला बच्चा भी 10वीं 10th ईयर्स में वही पढ़ रहा है जो पाकिस्तान का पढ़ रहा है. इट इज़ द वे यू कम्युनिकेट, इट्स हाउ टू टीच, इट इज़ हाउ टू कनेक्ट, द मेथडोलॉजी दैट मैटर्स, नॉट द कंटेंट. अगर आप कह रहे हैं मैं करिकुलम अपडेट कर रहा हूँ तो यू आर रियली नॉट फोकसिंग ऑन द रियल थिंग. Curriculum hardly matters. 99% of the world curriculums for that age in Africa or in Los Angeles are totally same. It's the connect, it's the method, it's the teacher's enablement that matters, right? That enablement again comes from the trajectories and the methods which nations have learned from great teachers. And the very important thing which system is totally missing out is measuring it. Measuring it. We are measuring a very small part of it, but there where the technology can play a big role and teacher can be deburdened. You see, तीन चीज़ें होती है ना. क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और क्या ये इफ़ेक्टिव भी है कि नहीं, वो मकसद हम अचीव भी कर रहे हैं कि नहीं. इसको अगर हम उस तरह टर्मिनोलॉजी में देखें तो क्या पढ़ाना इज करिकुलम, ये तो सारी दुनिया में सेम है, except ये कि obviously certain things in the computing are running very fast and we have to change things. Otherwise तो 99% चीज़ें वही हैं. Yes, we have to add more computing in the very beginning. Pedagogy अगली चीज़ है कि कैसे पढ़ाना है. That's where this methodology is, which makes it efficient, which is now guided by the lots of evidence कि what works in our learning, how our forgetting curves plays, how the children gets motivation, and how the children get connected to the future if we show them the beauty of the subject. And assessment और इन सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी काफ़ी रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है. एंड पर्टिकुलरली इन द असेसमेंट्स वेयर वी कैन प्रिसाइजली नो वेयर द प्रॉब्लम इज, इट्स अ सिली मिस्टेक और द कंसेप्चुअल एरर, और एंड वी कैन deburden the teacher a lot if we can afford, right? इन सारी चीज़ों से ये जो सिस्टम 400 साल पहले या 300 साल पहले डिज़ाइन हुआ था इज़ रियली वेरी वेरी इनएफिशिएंट, इज़ वेरी वेरी इनएफिशिएंट. हम पहले 3 सालों में आफ्टर द चाइल्ड स्टार्ट एंटरिंग इनटू द स्कूल में एंटर होने के बाद 3 सालों में बच्चा बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज सारी सीख जाता है, उसके कंस्ट्रक्ट बन जाते हैं. एंड नेक्स्ट अबाउट 4 years वो सारी न्यूमरेसी की सारी बेसिक्स सीख जाता है. रीज़न क्या है? रीज़न ये है एक्सेस टू नॉलेज, दिस एनिमेटेड स्टफ, this stuff that now really plays with and interacts with all senses of the child very effectively. In 7 to 8 years, the child is done and now they can go to the field of their liking. They have actually determined their field. And their professional journey now starts after 6 to 8 years. We are retarding them to 12 years and I don't know how many years. Lekin the most important thing is
कि ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं, इट्स टोटली डूएबल, दिस अ ह्यूज एविडेंस ऑन इट, बट टू व्हाट एंड, दिस इज अ मीन्स, इससे हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। देखिए, अगर हम अचीव यही करना चाह रहे हैं कि एक ऐसा बच्चा बनाना है जो पैसे कमा सके अपने लिए, फिर तो ये सारी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा रेलिगेट करने वाली, फिर तो वो दुकान हुई, वो एजुकेशन ना हुई। इट्स नॉट जस्ट फॉर इंटेलेक्चुअल। ये ट्राइंगल हमें सही ओरिएंट करनी है। इट्स नॉट जस्ट फॉर टू शार्पन माई ब्लेड्स, इट इज टू सॉफ्टन माई हार्ट्स एज वेल। इस ट्राइंगल को इस तरह ओरिएंट करना है कि इट्स ऑल फॉर कनेक्टिंग to the nature, connecting to yourself, connecting to the truth, connecting to the creator. All these intellectual and body things will come, but the real thing is it has to be spiritual, it has to connect to the truth. अगर उसको वो connectedness नज़र नहीं आती, तो we are creating a child who is stressed, who doesn't know where he is going, who doesn't know the objective of all he is doing, who is too myopic, who is actually directionless. तो education that works on hearts and minds, जिसको इकबाल ने कहा है ना, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं. So this is the right thing. We have to do the right thing the right way. ये बातें हम अभी तक कर रहे थे, और हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे कि अब साइंस हमें, और आजकल की जो इतनी ज़्यादा एक्सेस है नॉलेज की, और हमें चीज़ें समझ आई हैं साइंटिफिक एविडेंस से भी, एंड ऑब्वियसली द एंशिएंट विजडम से भी, और ग्रेट टीचर से भी, दे मेक थिंग्स सो ईजी फॉर अस टू डू दैट, एंड इट्स टाइम टू चेंज. And actually it's about simplifying, it's not about complicating the stuff. We'll discuss these things in detail in the next time.